Assalamu alaikum students. I am again here to welcome you all to lecture number 2 of computer for class 3. Before starting our today's lecture, let's take a preview of the last lecture. In the previous lecture, we taught about the function of different tools of paint program, the uses of different tools of paint program. Students, let's begin the second chapter, input and output devices. What is a keyboard? Students, do you know what is the keyboard? The keyboard is an input device. A keyboard has a set of keys and help us to type text. It is used to enter data into the computer. A keyboard has a alphabet keys, नंबर्स कीज़ एंड स्पेशल कीज़. ये जो कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है इसमें बहुत सारी डिफरेंट कीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपना कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट माउस? माउस इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. इट इनेबल्स यूज़र टू मूव द पॉइंटर अराउंड ऑन द स्क्रीन. The mouse is used to point at words or icons on the screen and select them. We can select an object or icon by double clicking the left button. While moving the mouse, it is called dragging the mouse. माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद कोई भी आइकन क्लिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. माउस में 2 बटन दिए होते हैं, एक राइट क्लिक बटन कहलाता है और एक लेफ़्ट क्लिक बटन कहलाता है. और बिटवीन द बटन, इन बटन्स के बिटवीन में क्या दिया होता है आपको, वो कहलाता है व्हील. व्हाट इज़ जॉयस्टिक? Joystick is a handheld device that is used to play video games. It controls movements of the cursor. The joystick is a pointing device like that mouse. जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो हमें एक हैंडहेल्ड डिवाइस की ज़रूरत होती है. वो डिवाइस क्या कहलाती है? यस, जॉयस्टिक. इसकी हेल्प से हम कोई भी गेम आराम से खेल सकते हैं. What is a scanner? A scanner is an input device that copies words, numbers or pictures from a book or paper to the computer. Scanner एक इनपुट डिवाइस है. इसकी हेल्प से हम कोई भी वर्ड, नंबर, पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बुक से अपनी कॉपी करनी है, उसका प्रिंट निकालना है, वो हम इसकी हेल्प से कॉपी करके निकाल सकते हैं. What do you know about the monitor? Monitor is an output device that displays information to the user. कोई भी स्क्रीन जो आपको आउटपुट दिखाती है वो मॉनिटर कहलाती है. हम कीबोर्ड की हेल्प से जो अपना डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो कहाँ डिस्प्ले होता है? यस, वो मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मॉनिटर दिखा रहा होता है अपनी स्क्रीन के ऊपर. What does printer do? The printer is an output device that prints output on the paper or any other thing visible on the computer screen. A printer is a device that transfers information out of the computer. A printout of the data is called hard copy. प्रिंटर की हेल्प से हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फिर प्रिंटर हमें प्रिंट आउट निकाल के देता है, वो प्रिंट आउट कहलाता है हार्ड कॉपी. लेसन रिव्यू. स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी हैव discuss input and output device in detail, explain the function of input and output devices, highlight their importance.